Osmoregulation. Very, very important word. Actually, it is a type of homeostasis. देखो बॉडी में किसी भी एक्टिविटी का एक बैलेंसिंग वे में कंट्रोल होता है, and all that balancing activity occurs in your body is collectively called as what? No, homeostasis. So homeostasis different types. जैसे कि टेम्परेचर रेगुलेशन को हम लोग बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन. वैसे ही solute and solvent regulation of the body fluid is called as what? Osmoregulation. So osmoregulation is a type of homeostasis, right? And then where actually we have the solute and solvent control. Here actually maintenance of osmolarity of the body fluid. Maintenance of osmolarity of body fluid by balancing solute and solvent content. Is called as osmoregulation, and osmoregulation is to be occurs by two different way. यहाँ पे दो अलग अलग वे से osmoregulation कंट्रोल होता है. One is counter current mechanism. And second is ADH mechanism. Counter current mechanism and ADH mechanism. So we'll first start counter current mechanism. जैसे कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में आपको समझाया था, काउंटर करंट का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड, मतलब एंटी पैरेलल. तो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड एंटी पैरेलल. So movement of the fluid anti-parallelly is called as counter current. तो यहाँ पे counter current दो टाइप का होता है. So counter current exhibited here is number one. It's called as counter current multiplier. काउंटर करंट मल्टीप्लायर में होता क्या है? ना इट इज forms the osmolarity. मैं आपको पूरा डायग्रामेटिकली शो करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. It actually forms or produces the concentration gradient. Forms or produces the osmolarity or concentration gradient
of, here that is osmolarity, concentration gradient in the medulla. Previous class में हम लोग पढ़े थे कि medulla में high osmolarity होता है कि low osmolarity होता है. Inner medulla में सबसे high osmolarity होता है कि नहीं? 12 milliosmol per liter. So who produces or who forms the osmolarity or concentration gradient of the medulla? Now that is in between ascending and descending loop of Henle. Very important. Means आपको ये याद रखना 3 पॉइंट यहाँ पे. What is the meaning of counter current multiplier? The counter current multiplier का मतलब है those who produces the high osmolarity in the medulla. Those who produces the high osmolarity in the medulla are called as counter current multiplier. And who produces it? The ascending and descending loop of Henle. क्योंकि ascending loop of Henle and descending loop of Henle ये दोनों काउंटर करंट एग्जिबिट करता है कि नहीं? डिसेंडिंग नीचे की तरफ जाएगा, असेंडिंग ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे काउंटर करंट एग्जिबिट करेगा. सो लूप ऑफ हेनले कौन सा काउंटर करंट प्रोड्यूस करेगा? ना मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर का मतलब क्या है? ना दोज हु प्रोड्यूसेस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द मेडुला. एंड सेकंड इज, देखिए सब लोग हो गया. सेकंड इज counter current exchanger. Counter current exchanger which is produced by loop of Henle and Vasa recta. Loop of Henle and Vasa recta. इन दोनों के बीच में तो काउंटर करंट एग्जिबिट करेगा ना, because I just told you in the previous classes कि descending limb of loop of Henle is close to the ascending Vasa recta and ascending limb of loop of Henle is close to descending Vasa recta. तो यहाँ पे loop of Henle and Vasa recta के बीच में भी काउंटर करंट एग्जिबिट करेगा कि नहीं? But that counter current is not counter current multiplier. But that is counter current what? Exchanger. So what is the meaning of counter current exchanger? That maintain the high osmolarity or concentration gradient of medulla or in medulla. दो चीज है, दो चीज पे बहुत ध्यान से आपको सुनना है, समझना है. Who produces the high osmolarity in the medulla is called as counter current multiplier. Those who maintain the high osmolarity in the medulla is called as counter current exchange. दो अलग अलग चीजें, एक प्रोड्यूस करता है, दूसरा इसको मेंटेन करता है. तो प्रोड्यूस करता है ओनली लूप ऑफ हेनले, लेकिन उसको मेंटेन कौन करता है? ना भासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले बोथ. ठीक है, तो इसीलिए सीधा सीधा क्वेश्चंस पूछेगा. अब मैं आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूं कि हाउ इट इज एक्चुअली produces and how it is actually maintaining the high osmolarity in the inner medulla.
supposed to be this is loop of Henle and this is Vasa recta. तो रीड कर अब नहीं कर सकते. So मान लेते हैं supposed to be this is loop of Henle and this is Vasa recta. Let's differentiate it. This is supposed to be the upper part is what ना supposed to be मान लेते हैं ये cortex है, ठीक है? Upper part is cortex. Then it is outer medulla and this is what ना inner medulla. ये तो clear है? So this is cortex. This is outer medulla. And this is inner medulla. Now the next is this is descending limb of loop of Henle. This is ascending limb of loop of Henle. But अगर हम लोग इस भाषा रेखा को पूरा loop of Henle के नजदीक ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? This one is ascending limb of ascending भाषा रेखा and this is what descending भाषा रेखा. अगर इसको ओवरलैप कर देते हैं, ठीक है ना, ओवरलैप कर देंगे, so this ascending limb of loop of Henle is close to descending भाषा रेखा and descending limb of loop of Henle is close to ascending भाषा रेखा. अब प्रीवियस क्लास में हम लोग कुछ पढ़े थे, याद कर लो. Osmolarity which is takes place in the PCT is present in the cortex. तो PCT में जो osmolarity है that is actually 200 to 300 milliosmol per liter. ठीक है, 200 to 300. And how when this nephric filtrate will be pushed down, ये जब नीचे की तरफ आएगा descending limb of loop of Henle is permeable to water कि impermeable to water? क्या होगा? Descending limb of loop of Henle is permeable to water कि impermeable to water? Permeable to water. And ascending limb of loop of Henle is permeable to salt and impermeable to water. So जैसे ही ये नीचे की तरफ आएगा वाटर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं? एंड जैसे जैसे वाटर एब्जॉर्प्शन होगा ये जो ऑस्मोलैरिटी धीरे धीरे इंक्रीज करेगा. 400 then 600 then 800 then 1000 then 1100 and finally at the hairpin part of the loop of Henle that is 1200 milliosmol per liter. समझ में आ रहा है कि नहीं? सेम टू सेम भाषा रेक्टा में आ रहा है. भाषा रेक्टा में क्या है ना, हम यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पढ़े हैं तो उसके नजदीक क्लोज कौन रहता है ना? एसेंडिंग भाषा रेक्टा.
ठीक है। नाउ व्हेन दिस nephric filtrate is passes through the ascending limb of loop of Henle. So ascending limb of loop of Henle is what now permeable to different type of salt, especially I am telling what ना NaCl. तो NaCl यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा NaCl, तो वैसे ही ये 1200 फिर से डिक्रीज करेगा, अगेन 1100, then 1000, then again 800, then 600, then 400, then 300 to 200 हो जाएगा कि नहीं। इसलिए मैंने बोला था कि आउटर मेडुला का जो ऑस्मोलरिटी है वो कितना है ना, 400 टू सॉरी 600 टू मैक्सिमम 800, एंड इनर मेडुला का कितना है ना 1000 टू 1200। क्लियर है। अब हम लोग भाषा रेक्टा में आते हैं। भाषा रेक्टा का डिसेंडिंग भाषा रेक्टा, क्योंकि डिसेंडिंग भाषा रेक्टा पहले आएगा, याद आया कि नहीं। Efferent arteriole branches to form what ना descending vasa recta, याद आया। तो when the blood is passing through the descending vasa recta में भी यहाँ पे वही 200 to 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होगा, 200 to 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होगा ब्लड प्रेजेंट इन द vasa recta of the descending। नाउ ये जैसे ही डाउनवर्ड मूव करेगा, ध्यान से 2 सेकेंड लगेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिसेंडिंग vasa recta is close to what, ascending lip of Henle। तो ascending lip of Henle में कौन सा चीज एब्जॉर्ब हो रहा है, ये NaCl एब्जॉर्ब होके जा किस में रहा है, फ्रॉम नेफ्रॉन इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, याद आया, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। एंड ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड अगेन किस में आ जाएगा, डिफ्यूज होके ब्लड में आएगा कि नहीं, एंड उसके नजदीक कौन सा ब्लड वेसल है ना, डिसेंडिंग भाषा रेखा। तो ये NaCl अल्टीमेटली किस में एंट्री कर रहा है, दिस NaCl अल्टीमेटली एंटर इनटू व्हाट, डिसेंडिंग भाषा रेखा, है कि नहीं। तो जैसे जैसे यहाँ पे NaCl का क्वांटिटी एंट्री करता जाएगा, ये NaCl यहाँ पे एंट्री करता जाएगा, तो ये जो ऑस्मोलरिटी है इंक्रीज करता जाएगा, दैट इज 400, 600, 800, 1000, 1100, then again 1200, है कि नहीं। And now when this osmolarity, or sorry, the blood which is passes through the ascending vasa recta is close to what, the descending loop of Henle, and descending loop of Henle में क्या absorb हो रहा है, water। यही water किस में एंट्री करेगा, ascending vasa recta की descending vasa recta, ascending vasa recta। तो ascending vasa recta में जब nephric filtrate पास करेगा, water ऐड होता जाएगा, वाटर ऐड होता जाएगा, तो ऑस्मोलरिटी धीरे धीरे क्या होगा ना, डिक्रीज करेगा कि नहीं। तो 1100, then again 1000, then again 800, then 6, then 4, then again 300 to 200। इसीलिए आइदर ये नेफ्रॉन का पार्ट हो, मतलब मेडुलर इंटरस्टिशियम की बात करें, या तो ब्लड की बात करें, नेफ्रॉन में या ब्लड में हर जगह कॉर्टिकल पार्ट में लो ऑस्मोलैरिटी, एंड मेडुलरी पार्ट में क्या है, हाई ऑस्मोलैरिटी। एंड आई जस्ट टोल्ड यू कि हाई ऑस्मोलैरिटी इन द मिनर मेडुला इज बिकॉज ऑफ द रिटेंशन ऑफ NaCl एंड यूरिया, याद आया, क्लियर है। जल्दी आप 2 सेकंड में फिनिश करिए। 1 मिनट आपके पास। तो यहाँ पे क्लियरली काउंटर करंट एग्जिबिट हुआ।
Make fast. अब बहुत दिन के बाद आ रहे हैं, कोई दिक्कत था आपको? फिर ऐसे बीच बीच में आना फिर गायब हो जाना अच्छी आदत नहीं है, बहुत ही घटिया आदत। ऐसे आप डॉक्टर नहीं बन सकती। लिख के रखो, आज के डेट में सर ने बोला था कि हम डॉक्टर नहीं बन सकते, अगर ऐसे करेंगे 2 साल के बाद मुझे फोन करके बोल देंगे हम नहीं बनता है। डॉक्टर बनने के लिए डेडिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। डेडिकेशन करेगा, जिंदगी में किसी भी चीज पे आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी। तो आगे चलते हैं। ये मैंने आपको क्या समझाया, काउंटर करंट मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दिया। आई जस्ट टोल्ड यू कि osmoregulation is to be controlled or maintained by the two different way. One is counter current, another is ADH mechanism. जो हम लोग नेक्स्ट में आते हैं ADH mechanism. ADH, that is anti-diuretic hormone. और vasopressin. Actually, why it is called as vasopressin? Because it is vasoconstrictor. It is act as vasoconstrictor. मतलब जो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, वैसोकंस्ट्रिक्टर, सो कॉल्ड एज वैसोप्रेसिन। ये उसका मेन ओरिजिनल नेम। बट व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन? बिकॉज इट प्रिवेंट diuresis. Because it prevent diuresis by absorption of water. अगर वाटर एब्जॉर्प्शन हुआ, अगर वाटर एब्जॉर्प्शन हुआ तो यूरिन फॉर्मेशन कम होगा कि ज्यादा होगा? अगर वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है तो यूरिन फॉर्मेशन क्या होगा? ज्यादा। वाटर एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं, एक्सक्रीशन नहीं बोल। कब आप लोग सुधरोगे? इस साल सुधरोगे? वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है ज्यादा तो यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होगा नहीं? मैं अपने आप को कंट्रोल बहुत कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा कंट्रोल करने के लिए मेरे पास और कैपेसिटी नहीं है। So as the water absorption takes place more, so the urine formation takes place less. क्वांटिटी कंट्रोल में रहता है। अगर यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा हो गया then it is called as diuresis. What is the meaning of diuresis? The excess formation of urine, excess excretion of removal of the urine or water from the body is called as what? Diuresis. तो ये क्या करता है? वैसोप्रेसिन एक्चुअली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा ज्यादा नेफ्रॉन से, तो यूरिन फॉर्मेशन क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ यूरिन विल बी लेस। तो अल्टीमेटली ये लीड्स टू यूरेसिस के प्रिवेंट डायूरेसिस, प्रिवेंट डायूरेसिस। जो डायूरेसिस को प्रिवेंट करेगा हम इसको क्या बोलेंगे? एंटी डायूरेटिक हार्मोन।
Diuresis means formation of more urine, and they are preventing the diuresis by absorbing more water. तो इसीलिए एडीएच अगर डेफिशिएंसी किसी में होता है, the urine formation takes place more, and that is called as what? Diabetes insipidus. क्या बोलते हैं उसको? Diabetes insipidus. So ADH और vasopressin, it is secreted by hypothalamus. It's secreted by hypothalamus and released and stored and released by posterior pituitary. तो सिक्रेट कौन किया? ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं. तो ADH is secreted by what? Hypothalamus. Secrete करता है hypothalamus, लेकिन आके स्टोर कहाँ पे हो जाता है? posterior pituitary में स्टोर होगा. तो रिलीज कौन करेगा? जहाँ पे स्टोर्ड है. तो स्टोर्ड एंड रिलीज बाय द posterior pituitary. तो posterior pituitary एक्चुअली सिक्रेट नहीं करता है हार्मोन, वो सिर्फ खाली उसको स्टोरेज करता है. गोडाउन है वो, प्रोडक्शन किसी फैक्ट्री से हो रहा है. फैक्ट्री कौन है? हाइपोथैलेमस. So it act on the city and collecting duct to absorb both water. So urine becomes hypertonic. Or less urine. Deficiency of ADH leads to diabetes insipidus. डायबिटीज इंसिपिडस में कैरेक्टर क्या होगा? डायूरेसिस होगा कि नहीं? डायूरेसिस होगा, हाइपोटोनिक यूरिन होगा. हाइपोटोनिक यूरिन मींस व्हाट? ना डाइल्यूट यूरिन. बट याद रखिए ये दोनों कैरेक्टर डायबिटीज मेलिटस में भी होता है. डायबिटीज मेलिटस जो डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट है? इंसुलिन. इंसुलिन डेफिशिएंसी लीड्स टू डायबिटीज मेलिटस. तो डायबिटीज मेलिटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस में ये दोनों कॉमन चीज है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डायबिटीज मेलिटस में क्या होगा ना? यूरिन विद ग्लूकोज, हम लोग पढ़े थे. बट डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होगा ना? ग्लूकोज फ्री यूरिन. तो ये क्या होगा ना? ग्लूकोज फ्री होगा. अगर ग्लूकोज फ्री यूरिन हुआ, डायूरेसिस हुआ, तो डायबिटीज इंसिपिडस. बट डायूरेसिस प्लस ग्लूकोज प्लस यूरिन है तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज मेलिटस. एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू ADH? नो. Now what are the diuretic substance? क्योंकि ADH और vasopressin एक्चुअली व्हाट ना? एंटी डायूरेटिक है ये. तो इसका ऑपोजिट क्या है? डायूरेटिक. तो डायूरेटिक सब्सटेंस मींस दोज हु लीड्स टू डायूरेसिस और दोज हु प्रिवेंट डायूरेसिस. लीड्स टू डायूरेसिस मतलब ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन होगा, क्वांटिटी यूरिन ज्यादा होगा. तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन के लिए रोल है, फैसिलिटेट करता है, लीड्स करता है? And these are called as what? Diuretic substance. Diuretic substance .
which inhibit diuretic substance are those who inhibit the ADH. भाई सिंपल है, जो ADH को इनहिबिट करेगा उसी को डाययूरेटिक सब्सटेंस बोलेंगे। तो जो ADH को इनहिबिट किया मतलब वो डायरोसिस को लीड्स किया। So those who inhibit the ADH and leads diuresis are called as diuretic substance. Example है caffeine. Caffeine present in what? Not tea, coffee, cold drinks, and alcohol. तो दो चीज यहाँ पे याद रखना है, कैफीन एंड अल्कोहल। ये दोनों क्या करता है? एडीएच को स्टिमुलेट करता है कि इनहिबिट करता है? दीज टू आर एक्चुअली इनहिबिट द एडीएच। इसीलिए जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जो टी कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पीते हैं, उनके केस में यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होगा, बॉडी डिहाइड्रेटेड होगा। सिंपल है, समझे? We are coming to the next, that is maturation or urination. चलिए नेक्स्ट पेज जल्दी। So moving to the next page. Micturition or urination. It is the process of voiding of urine. It is the process of voiding of urine, मतलब removal of the urine by means of a reflex, micturition reflex. तो micturition reflex जो है वो बॉडी में काम करता है, so that the voiding of the urine takes place, called as micturition, and this micturition reflex is controlled by cerebral cortex. पढ़े थे हम लोग प्रीवियस क्लास में, and that is the reason why the voiding is what ना voluntary. And इसीलिए मैंने बताया था कि micturition और urination is a voluntary process. So steps लिख लेते हैं यहाँ पे। Urine filled in urinary bladder. जैसे जैसे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन फील्ड होता जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर धीरे धीरे स्ट्रेच होता जाएगा। स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होगा तो स्ट्रेच होते 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 तो ये ब्रस्ट कर जाएगा। इसीलिए एक एक्सेसिव स्ट्रेच होने के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, राइट, stretching of the urinary bladder that will initiate the stretching receptor.
on the wall of urinary bladder. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रेच रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? यूरिनरी ब्लैडर के वॉल में जो स्ट्रेच रिसेप्टर है, स्ट्रेच रिसेप्टर इनिशिएट कब हुआ? The stretch receptor being initiated with the stretching of what? Na urinary bladder. And जैसे ही stretch receptor initiate होगा, that will send the sensory impulse to cerebral cortex. मतलब to the brain है कि from the brain है? To the brain होगा तो sensory होगा, रहेगी नहीं. And from the brain होगा तो ये क्या हो जाएगा ना? मोटर हो जाएगा ना. So from cerebral cortex now motor impulse from cerebral cortex to detrusor muscles. याद करिए, muscles present in the urinary bladder is called as detrusor muscles. So motor impulses from cerebral cortex to detrusor muscles and sphincter muscle. याद करिए, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको नेक पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर में दो स्फिंक्टर बताया था. एक्सटर्नल दैट इज स्फिंक्टर व्हिच इज व्हाट ना वेलिंट्री, and the internal sphincter is made up of smooth muscles, that is involuntary. So the motor impulses is actually coming to both the detrusor muscles and the sphincter muscle at a time, and that leads to contraction of detrusor muscle and relaxation of sphincter muscle. समझेगी नहीं? डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन स्फिंक्टर मसल्स का क्या हुआ? रिलैक्सेशन हुआ. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड दैट लीड्स टू मैच्योरेशन. मैच्योरेशन होने के लिए वो जो ओपनिंग है वो ओपन होना चाहिए कि नहीं, एंड प्रेशर भी बढ़ना चाहिए. तो प्रेशर हैज बीन क्रिएटेड बिकॉज़ ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रूसर मसल, एंड दैट ओपनिंग टू बी ओपनड ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर मसल्स. ये दोनों को कंट्रोल कौन किया? सेरेब्रल कॉर्टेक्स. एंड ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स को इंपल्स सेंड कौन किया? ना स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट इन द यूरिनरी ब्लैडर. क्वेश्चंस पूछेगा, अगर किसी पर्सन में किसी के केसेस में ये यूरिनरी ब्लैडर से अगर स्ट्रेच रिसेप्टर को हम हटा दिए तो the stretch receptor present in the urinary bladder has been removed, for example, what will be happen? There is no micturiation. और micturiation process initiate कहाँ से हुआ? The stretch receptor being initiated. अगर stretch receptor ही नहीं रहेगा, micturiation initiate कैसे होगा? There is no, but filling of the urine will continue. यूरिन का जो फिलिंग है वो कंटिन्यू करेगा, लेकिन ये मैच्योरेशन डजंट टेक प्लेस. क्लियर है? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. आप ये मत सोचिए कि उसका मैच्योरेशन नहीं होगा तो क्या होगा, वो तुम्हारा काम नहीं है सोचना. तुमको इतना दिया गया है भाई, ये है फंक्शन, ये नहीं होगा तो क्या नहीं होगा ना, ये फंक्शन नहीं होगा, है ना. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई, दिमाग लगाते हैं बहुत ज्यादा, और बैठ के ना एग्जाम हॉल में दिमाग लगाते रहे, ऐसे कैसे हो गया, उसके मैच्योरेशन नहीं होगा. ये क्वेश्चन गलत है. समझ में कि नहीं भाई? किसी का डेंटल फार्मूला 2.123 था, उसका एक्सीडेंट की वजह से उसका डेंटल फार्मूला 2102/2102 हो गया. तो व्हाट इज द नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट? ऐसे क्वेश्चंस आता है. हाँ, एक्सीडेंट हो गया. ऐसे कैसे एक्सीडेंट हो गया? अगर एक्सीडेंट होना था तो 2-3 दांत टूटा, 4-5 दांत पर से टूट गया. बच्चे ऐसे सोचते हैं, तो ध्यान रखिए, आपको ज्यादा सोचना नहीं. आपको दिया है ये क्वेश्चन और इसका आंसर ये है भाई, उसका फंक्शन ये था तो फंक्शन नहीं होगा. सिंपल है.
This is all about the process of maturation or urination. कुछ पॉइंट्स और जो मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ. Capacity of urinary bladder is 400 to 600 ml. A maximum 400 to 600 ml of urine can be stored inside the urinary bladder. Maximum expand हो सकता है. Next, urea in blood and urea in urine. दो अलग अलग चीज. यूरिया इन ब्लड कितना है? ना दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 मिलीग्राम. मिलीग्राम समझ रहे? 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम? थाउजेंड. So urea in blood is approximately 25 to 30 milligram per 100 ml. So 100 ml blood में कितना मिलीग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट है ना? 25 to 30. बट अगर यूरिया इन यूरिन की बात करें तो दैट इज 2 to 3 ग्राम पर 100 ml. So 100 ml of urine contains how much quantity of urea? समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 to 3 ग्राम. तो अगर हम कंपेयर करें, अगर हम लोग कंपेयर करें, यहाँ पे आप इसको 25 को 20 कर सकते हैं क्योंकि वैरी करता है. 25 करेंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा. 20 to 30 मिलीग्राम हम कर सकते हैं. अगर दोनों को कंपेयर करें, ब्लड में ज्यादा यूरिया होता है या यूरिन में ज्यादा यूरिया होता है? यूरिन. सो यूरिया इन यूरिन is 100 times more than blood. यहाँ पे मिलीग्राम है तो यहाँ पे ग्राम है. डेली यूरिन कितना है ना? 1 to 1.5 लीटर पर डे. तो फिर डेली यूरिया कितना है? डेली यूरिया कितना एक्सक्रीट होगा बताइए ना? पर 100 ml कितना ml कितना ग्राम एक्सक्रीट होता है? 2 to 3 ग्राम. समझ में आ रहा है कि? तो मैक्सिमम कितना यूरिया एक्सक्रीट हो सकता है पर डे? डेली यूरिया एक्सक्रीटेड 3 to 45. इतना नहीं होगा. डेली यूरिया एक्सक्रीशन इज 25 to 30 ग्राम पर डे. ये सब क्वेश्चंस आपको पूछता है. समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब इंफॉर्मेशन. एंड द पीएच हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि भाई स्लाइटली एसिडिक होता है. थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक भी हो सकता है अगर H+ आयन कंटेंट ज्यादा रहेगा, यूरिक एसिड कंटेंट ज्यादा रहेगा. सो एवरेजली हम लोग ले सकते हैं पीएच ऑफ यूरिन is approximately 6.0. मतलब एसिडिक हुआ कि नहीं? What is the color of urine? पेंट येलो है. अगर यूरिन कंसेंट्रेट ज्यादा होगा तो येलो डीप ज्यादा होगा. क्वांटिटी ऑफ यूरिन डिक्रीजेस, डीप येलो कलर हो जाएगा.
अगर यूरिन क्वांटिटी ज्यादा होगा फेंट येलो और फेंट होगा, एंड दिस येलो कलर इज ड्यू टू यूरोक्रोम और यूरोबिलिन. Eurochrome or urobilin is actually what? Na breakdown of bile pigment. And हम लोग पढ़े हैं कि bile pigment जो है bilirubin and biliverdin, याद है ना? And bilirubin biliverdin is because of the presence of what? ना hemolysis. याद करिए. Breakdown of hemoglobin gives rise to bilirubin and biliverdin. And वही bilirubin and biliverdin का एक modified form क्या है ना? Eurochrome and urobilin. जो स्टूल में भी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइल पिगमेंट, यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट होता है, इसलिए यूरिन का कलर 24/7 सेम रहता है. अगर हेल्दी ह्यूमन बीइंग की बात करें तो फेंट येलो रहेगा. तो यूरिन का कलर भी डिसाइड करता है कि आपके बॉडी में कुछ एबनॉर्मलिटी है कि नहीं. समझ में आ रहा है कि नहीं? नाउ वी आर कम टू द एबनॉर्मलिटी और एबनॉर्मल कंपोजिशन ऑफ द यूरिन. एबनॉर्मलिटी इन द कंपोजिशन ऑफ यूरिन. हम लोग इतना जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि यूरिन का नॉर्मल कंपोजिशन क्या होना चाहिए इतना तो याद है ना. अब एबनॉर्मलिटी की बात करें. सपोज टू बी a person having the urine with what? Na albumin protein. अगर किसी के यूरिन में एल्बुमिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो ये क्या इंडिकेट करता है? नॉर्मली एल्बुमिन प्रोटीन इज एब्सेंट इन द यूरिन, राइट? अगर किसी पर्सन के यूरिन में एल्बुमिन प्रोटीन प्रेजेंट है तो ये इंडिकेट करता है कि फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं हुआ है. क्योंकि फिल्ट्रेशन जब होगा ये एल्बुमिन फिल्ट्रेट नहीं होगा. फिल्ट्रेट डज नॉट टेक्स प्लेस ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन का फिल्ट्रेशन नहीं होता है. अगर प्रोटीन का फिल्ट्रेशन हो गया, यूरिन में एल्बुमिन प्रोटीन प्रेजेंट है, तो ये इंडिकेट करता है देयर मस्ट बी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. कल हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है? ना इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस. Number 2, presence of glucose in the urine. अगर यूरिन में ग्लूकोज होगा तो क्या इंडिकेट करता है? डायबिटीज व्हाट? mellitus. Presence of bile salt and bile pigment. अगर बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट यूरिन में ज्यादा एक्सक्रीट हुआ तो ये इंडिकेट करता है जॉन्डिस, है कि नहीं? नंबर 4, ketone bodies. A very important ketone bodies actually form due to breakdown of फैट. अगर आपके बॉडी में जो फैट है ना, अगर वो ब्रेकडाउन हुआ तो क्या बनेगा? कीटोन बॉडीज.
तो कीटोन बॉडीज अगर यूरिन में प्रेजेंट है क्या इंडिकेट करता है? इतना समझना इजी नहीं है, अगर इतना कैजुअल रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। आपके बॉडी में 3 टाइप का रिजर्व फूड मटेरियल, फर्स्ट इज ग्लाइकोजन, दैट इज कार्बोहाइड्रेट इन द लिवर। सेकेंड क्या है, जो लिपिड और फैट। थर्ड क्या है ना, प्रोटीन। हम लोग रोज रोज खाते हैं, एवरी टाइम खाते हैं, रेगुलरली खाते हैं, तो आपको खाने से एनर्जी मिल जाता है। अगर आपको खाना नहीं मिला, कुछ घंटे के लिए आपको खाना नहीं मिला, लेकिन बॉडी का एक्टिविटी मेटाबॉलिक प्रोसेस तो कंटिन्यू करेगा, तो बॉडी विल डिराइव द एनर्जी फ्रॉम रिजर्व फूड मटेरियल। तो बॉडी का फर्स्ट टारगेट क्या है ना, ग्लाइकोजन मतलब कार्बोहाइड्रेट। अगर ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड खत्म हो गया तो बॉडी का सेकेंड टारगेट क्या होगा ना, फैट और लिपिड। तो लिपिड ब्रेकडाउन होगा कि नहीं, पढ़े थे हम लोग, लिपिड का ब्रेकडाउन होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है वो, एंड दैट लिपिड ब्रेकडाउन गिव्स राइज टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट ना, कीटोन बॉडी। अगर कीटोन बॉडी यूरिन में प्रेजेंट है इन एक्सेस क्वांटिटी तो इंडिकेटेड कि द पर्सन इज प्रोलंग्ड फास्टिंग। प्रोलंग्ड फास्टिंग क्या है वो, प्रोलंग्ड फास्टिंग, लंबे टाइम के लिए खाया नहीं है, नहीं समझे, ठीक है। तो प्रोलंग्ड फास्टिंग। नाउ सपोज टू बी यूरिन में नेक्स्ट क्या हम लोग को मिलता है ना, क्रिएटिनिन। क्या मिलता है, क्रिएटिनिन इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन ब्रेकडाउन से क्या बनता है ना, क्रिएटिनिन। अगर यूरिन में क्रिएटिनिन किसी का मिलता है हाई क्वांटिटी, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि प्रोटीन ब्रेकडाउन उसके बॉडी में स्टार्ट हो चुका है। एंड प्रोटीन ब्रेकडाउन कब होता है, जब लिपिड खत्म हो जाता है। मतलब ये जो बंदा है, ये जो पर्सन है, ये जो आदमी है, स्टार्व्ड कंडीशन में है, लॉन्ग टाइम से स्टार्व्ड कंडीशन में। इसीलिए दोनों क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, लॉन्ग फास्टिंग, स्टारवेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं, हंगर स्ट्राइक, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे तो उसके हंगर, कोई एक बंदा जो है हंगर स्ट्राइक में बैठा है 5 दिन से कि 3 दिन से, तो उसका क्या एबनॉर्मेलिटी में क्या प्रेजेंट रहेगा, कीटोन बॉडीज की, दैट इज व्हाट ना, दिस क्रिएटिनिन। सो ब्रेकडाउन। और एक मैं आइडिया देता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डायबिटीज मेलिटस होते हैं, डायबिटीज मेलिटस पेशेंट आप लोग घर में अगर कोई देखा होगा तो दुबला पतले होते हैं या मोटे सोटे होते हैं, पतले होते हैं। हाई डायबिटीज पेशेंट जो है वो बहुत ही लीन एंड थीन होते हैं, पतले होते हैं, थोड़ा अनहेल्दी होते हैं। व्हाई? व्हाई सो? बिकॉज इंसुलिन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड। इंसुलिन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड। अगर इंसुलिन डेफिशिएंसी है तो ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड। तो फिर डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट के केसेस में लिपिड ब्रेकडाउन होगा कि लिपिड फॉर्मेशन होगा, and breakdown of lipid gives rise to, so ketone bodies present in the urine is an second indication that diabetes mellitus. तो डायबिटीज मेलिटस का 2 इंडिकेशन हो गया, एक तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, सेकंड है प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज प्रेजेंट leads to diabetes mellitus and prolonged fasting. Number 5, creatinine, that is formed due to breakdown of protein, and this to be occurs when एक तो हाइपरथायरॉयडिज्म, सेकंड इज स्टार्वेशन। एंड ये हाइपरथायरॉयडिज्म का क्या केस है, इसका क्या कंसेप्ट है? देखिए हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब क्या है, हाई सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन की लो सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, and that leads to a disease called as Graves disease, हम लोग पढ़ेंगे। तो जिसके केस में हाइपर सिक्रेशन होगा थायरोक्सिन, एंड थायरोक्सिन इज ए मेटाबॉलिक हार्मोन, थायरोक्सिन इज ए मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अगर किसी का थायरोक्सिन लेवल हाई हो गया तो हाई मेटाबॉलिज्म की लो मेटाबॉलिज्म,
अब मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो बॉडी का टारगेट ग्लाइकोजन को खत्म करके, लिपिड को खत्म करके प्रोटीन को टारगेट करेगा। तो जिस किसी का भी हाइपरथायरॉयडिज्म होता है वो भी दुबले पतले होते हैं, लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म जिसका कम होता है थायरोक्सिन, वो पफी होते हैं, स्वेल होते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म स्वेल, पफी अपीयरेंस, फेस, हैंड, ये सब क्या होगा ना, स्वेल्ड होगा। लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म में पतले होते हैं, फैट खत्म हो जाता है। कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। नहीं तो ऐसे ही खाली सुनोगे, भूलोगे, फिर आ जाओगे, फिर सुनोगे, फिर भूलोगे। ऐसे कहानी नहीं होता है, इसलिए दिमाग से सोचो। बहुत ही इंटरेस्टिंग है बायोलॉजी, स्पेशली जूलॉजी। तो वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द चैप्टर। थोड़ा सा